प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। मैम मैंने गौरी के लिए मैम बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है। अरे वेरी गुड, लेट्स होप मैम यू पर हैव अभी फन। घर पे जा नहीं सकता मैम, इसलिए मैम मैंने मीट पे कर दी। अरे वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग के पास खाना तो है ही नहीं, खाएंगे क्या? चल हम लोग देखते हैं कौन कौन बचा हुआ है। मैम मेरा ओरल टेस्ट नहीं हो पाया था। हाँ बेटा आरुष 2 मिनट रुक जा, मुझे और किसी, बस बस सबकी सबकी विशेष पहुंच गई है गौरव के पास। इतने लंबे लंबे मैसेजेस मत करो, इतना सारा केक वो नहीं खा पाएगा। ठीक है, यस आरुष। मैम वो बहुत ओपन ज्यादा मोटा हो जाएगा। बस बस अब मेरे को टेस्ट लेने दो, अब बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यस आरुष। हाँ यस मैम। सो एक बार जरा मुझे याद दिलाओ कौन सा चैप्टर प्रेजेंट किया था तुमने, मैं भूल गई। मैम 5th चैप्टर मेजर अरे डोमेन्स नाम ऑफ बता द 5th चैप्टर का। मैम मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। हम्म, मैम मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ विच स्फीयर हैज वाटर। हाइड्रोस्फीयर। अच्छा, नेम एनी टू लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रेटोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। ठीक है, एंड वेयर डज लाइफ अकर, वेयर इज लाइफ, इन विच स्फीयर। बायोस्फीयर। चलो ठीक है, गुड। ऑल राइट, लेट मी टेक द नेम्स ऑफ द पीपल जिन लोगों का प्रेजेंटेशन नहीं हुआ था। इनमें से कोई भी अगर आज प्रेजेंट है और प्रेजेंटेशन देगा तो मैं उसे कुछ मार्क्स दे दूंगी, नहीं तो फिर मैं 0 दूंगी। अल्फेज, आशिका, देवेंद्र, धनंजय, हार्दिक, जयवर्धन, मुस्कान, पल्लव, प्रत्यूष्म, पुरुषोत्तम, उदय, युवराज। कोई भी मीटिंग में आया है क्या आज? प्रत्युष में आया है। प्रत्यूष में प्रेजेंट करोगे तुम? मैम मेरा तो नहीं हुआ। हिमांशु रुक जा बेटा, तेरा मुझे याद है, मुझे पहले दूसरे लोगों को टैकल करने दो। प्रत्यूष में प्रेजेंट करोगे, नहीं करोगे तो फिर मैं पूछूंगी नहीं बार बार। मुझे सुना ही नहीं दिया। नो मैम। ठीक है, तुम्हें 0 मिलेगा। ओके हिमांशु प्रेजेंट करो। मैम माय स्क्रीन इज विजिबल। यस योर स्क्रीन इज विजिबल। बाकी अब मैसेजेस बंद करो, ये बात हो गई है, अब प्रेजेंटेशन चल रहा है। यस योर स्क्रीन इज विजिबल, गो अहेड। ओम श्री साई राम। Solar system. These are the pictures of planets. Mercury. Mercury is the planet nearest to the sun. It has no moons. If you weigh 100 pounds on Earth, you would weigh only 37 pounds on Mercury. It takes less than 88 Earth days for Mercury to orbit around the sun. One day lasts about 180 Earth days. The temperature rises above 800 Celsius, while on the dark side it falls rapidly to minus 300 degrees Celsius. Venus. Venus, second planet from the Sun, brightest planet in solar system. Venus is known as Earth's twin sister because of its similar size and proximity to each other. Venus has a longer day than year. It takes 243 days for Venus to make a rotation. The Earth is estimated to 4.5 billion years old. It travels through space at 6,60,000 miles per hour. The Earth weighs 6,588 into 10 equals to 21 tons. The world is not round. It is an oblate surface flattened at the poles and bulging at the equator. Mars. Mars is the fourth closest planet to the sun. It can easily be seen from Earth. Mars is red because it is rusty. There is a lot of iron in the soil, and the air on Mars has made it turn red. Mars orbits the sun every 687 Earth days. The Martian day is about half a hour
longer than Earth, and winter nighttime temperature can drop as low as 191 degree Celsius. Jupiter. Jupiter is the largest planet in our solar system. Jupiter volume is large enough to contain 1,300 planets the size of Earth. Jupiter rotates faster than any planet in the solar system. It rotates so quickly that the days are only 10 hours long. But it takes 12 Earth years for Jupiter to complete an orbit around the Sun. If you weigh 100 pounds on Earth, you would weigh 264 pounds on Jupiter. Saturn. Saturn is the second largest planet. Only Jupiter is larger. Saturn has 7 thin flat rings around it. The planet can be seen from Earth with the unaided eye, but its ring cannot. It is so light that it could actually float on water if there was an ocean big enough to hold it. It takes about 29.46 Earth years for Saturn to orbit around our Sun. Saturn rings are made up of billions of pieces of rocks and dust. Saturn is a giant ball of gas, but it does have solid inner core. Uranus. Uranus is the seventh planet from the Sun. The planet most extraordinary because of the strange way it spends night on some parts of Uranus can last for more than 40 years. The planet most extraordinary features is the tilt of its rotational axis, which is almost perpendicular to axis which is almost perpendicular to the plane of the ecliptic, which means that it's alternately had its north pole and its south pole towards the sun. Uranus is the coldest planet in our solar system. Uranus and Neptune, both known as ice giants. It takes Neptune is so far away that it took the space probe Voyager 2 and 12 years to reach it. Neptune is the stormiest planet. The winds there can blow up to 1,240 miles per hour, that is 3 times as fast as Earth's hurricanes. Neptune is a sea blue color due to the methane gas in its atmosphere. Neptune has 8 moons. Neptune is 30 times farther from the Sun as the Earth. It goes around the Sun once every 165 Earth days. मैम हो गया. Okay. Which planet is called the red planet? Mars. Which planet appears the brightest from Earth's sky? मैम Mars. And where is the asteroid belt between which planet? Mars and Jupiter. Which is the smallest planet? Mercury. Which is the second largest planet? Saturn. ठीक है, फाइन. और कोई जो क्लास में प्रेजेंट हो जिसका प्रेजेंटेशन या ओरल टेस्ट कुछ बाकी हो तो आप अभी दे सकते हो. मैम प्रतिष्मा. बेटा वो नहीं देना चाहता, ठीक है, अब हम उसे बार बार नहीं पूछेंगे. ठीक है, सो दिस कंक्लूड्स द टेस्ट. हम लोगों का सेकेंड पीरियोडिक यहाँ से खत्म होता है. अब हम लोग बात करते हैं तुम लोगों के सबमिशन की. अब मुझे बताओ कि किस किस चीज का सबमिशन कब था. कोई एक बताएगा, हर कोई नहीं बताएगा. गौरिक बताओ मुझे, मैंने किस किस चीज का कब सबमिशन दिया था बेटा? मैम आपने चार्ट पेपर और मॉडल का दिवाली के बाद बोला था.
ठीक है, चार्ट पेपर और मॉडल का मैंने दिवाली के बाद बोला था, दिवाली हो चुकी है, बहुत सारा टाइम बीत चुका है। तो आप लोगों ने चार्ट पेपर या मॉडल कोई भी एक चीज बनानी थी, आपने जो भी बनाया है उसका आप एक पिक्चर खींचेंगे और मुझे ईमेल पे भेजेंगे। जिसने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा मैं उसे 0 दे दूंगी। आपने कहा था कि मॉडल की वीडियो बनानी है छोटी सी। ठीक है बेटा, अगर वर्किंग मॉडल है तो वीडियो बना देना, अगर वर्किंग मॉडल नहीं है तो उसकी फोटोग्राफ भेज दोगे चलेगा। मैम कल भेज सकते हैं। बेटा, मैम कब तक फोटो भेजनी है? बता रही हूँ, नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को है। यस मैम। नो मैम, वेडनेसडे। नो मैम वेडनेसडे। मंडे को तो छुट्टी है। अच्छा ठीक है, चलो एक काम करना, मंडे तक मेरे को आपके प्रेजेंट आपके सारे वो चाहिए। मैं आपको अगले फ्राइडे पे मार्क्स बता दूंगी फिर, ठीक है? मैम ओके मैंने मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, मैंने भेज तो दिया था। मैम, ओरल टेस्ट के मार्क्स कब पता चलेंगे? बेटा ये सबके मार्क्स मैं आपको थोड़ी देर से बताऊंगी, पहले मुझे एक बार ढंग से सब कंपाइल करना पड़ेगा। जब सब कुछ हो जाएगा, सारी क्लासेस का खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? तो ये चीज तो हो गई है। मैम हमारा आप लास्ट में बताओगी। बेटा पहले हिस्टोरिकल बाकी स्टोरी। सारी क्लास, मैं बहुत सारी क्लास का ले रही हूँ ना, मुझे सबकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। जब लिस्ट बन जाएगी मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैम मैंने बोलो। आपको पीपीटी भेज दी थी जीमेल पर, आपने देख ली? ठीक है बेटा, अगर आपने भेज दी होगी तो मैं देख लूंगी, चिंता मत करो, क्योंकि जो भी चीज आपने जीमेल पर भेजी है वो कहीं नहीं जाएगी, सब चीजें सेव रहती हैं उसमें। तो सभी लोग, मंडे को आखिरी डेट रहेगी, मंडे तक आप लोगों के प्रोजेक्ट या मॉडल के मार्क की पिक्चर मुझे आ जानी चाहिए। नहीं आएगी मैं आपको मार्क्स नहीं दूंगी, ठीक है? एक चीज क्लियर हुई। अब दूसरी बात करते हैं। ये सब हो गया है, अब और आपको कोई एक्टिविटी दी थी मैंने, गौरिक बताओ जरा मुझे। यस, मैम, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग दी थी। स्टोरी टेलिंग में हम लोगों का काम कहाँ तक पहुंचा था? मैम स्टार्टिंग मैम, हुआ आपने था। वो भी कहा था, वो भी असेसमेंट के बाद ले। अच्छा ठीक है, चलो तो हम अब हमारा असेसमेंट तो हो गया है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टोरी टेलिंग शुरू करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम, मैम। रोल नंबर वाइज होगा? स्टोरी नहीं बेटा, जैसे हम लोगों ने रैंडमली लिया है ना, हम रैंडमली ही लेंगे, क्योंकि रोल नंबर वाइज में फिर क्या होता है कि कुछ लोग जो जो है केवल फिर अपने टर्न पर ही क्लास अटेंड करेंगे। मैं चाहती हूँ सब लोग क्लास अटेंड करें, सब एक दूसरे की स्टोरी सुने। आई विल प्रेफर इट टू बी इन इंग्लिश, बट इफ इट इज इन हिंदी, ठीक है, थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी चलेगा, बट कुछ अच्छी स्टोरी होनी चाहिए। आपके पास पूरा वीक है, अगर आपने अभी तक भी प्रिपेयर नहीं करी है, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ ढंग का लेकर आना, कुछ अच्छी चीज होनी चाहिए। मैम उसे लर्न करके सुनाना है। बेटा आप देख के, आप पढ़ के भी सुना सकते हो, लेकिन जब आप पढ़ के सुनाओगे ना तो आपकी स्टोरी में अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। जो चीज आपको याद होती है ना, वो आप बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस से सुना पाते हो। मैम या फिर दो तीन बार रीड कर लियो मैम तब हाँ भी। डिपेंड करता है। ठीक है, और आपको कोई टास्क दिया था क्या मैंने? नो मैम। नो मैम। ठीक है, लेट मी सी। चलो पहले हम ये दोनों टास्क खत्म करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कुछ और करना है या क्या करना है। बट सिंस वी हैव टाइम टुडे, लेट्स सी सम नाइस वीडियो। लेट मी फाइंड समथिंग फॉर यू। मैम मैंने आपको चार्ट सेंड कर दिया था। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। मैम जिनने पहले चार्ट सेंड कर दिया उन्हें वापस भेजना पड़ेगा? नहीं नहीं बेटा, अगर आपने पहले सेंड कर दिया है कोई बात नहीं, बस ईमेल पर भेजा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम। मैम, मैंने आपको अपना पीपीटी भेज दिया था, वो आपको मिल गया था? बेटा मैंने ना अभी एक एक का चेक नहीं करा है, लेकिन अगर आपने भेज दिया है तो मुझे मिल गया होगा, उसकी चिंता मत करो। मैम
मैम वैसे तो मैम मैंने भेज दिया है मैम, लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिए बेटा, मैं मैम, मुझे ना पक्का मैं नहीं जब है। उसके मार्क्स देना शुरू करूंगी ना तो मैं एक बार आपसे पूछ लूंगी। मैं किसी के भी मार्क्स आपसे बात करे बिना नहीं काटूंगी, ठीक है? तो चिंता मत करो। ओके मैम। चलो, एक एम्पायर है उसकी हम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं, दैट व्हाट हैपेंड देयर। History's first empire rose out of a hot, dry landscape, without rainfall to nourish crops, without trees or stones for building. In spite of all this, its inhabitants built the world's first cities with monumental architecture and large populations, and they built them entirely out of mud. Sumer occupied the southern part of modern Iraq in the region called Mesopotamia. Mesopotamia means between two rivers, the Tigris and the Euphrates. Around 5000 BCE, early Sumerians used irrigation channels, dams, and reservoirs to redirect river water and farm large areas of previously bone-dry land. Agricultural communities like this were slowly springing up around the world, but Sumerians were the first to take the next step. Using clay bricks made from river mud, they began to build multi-storied homes and temples. They invented the wheel, a potter's wheel, for turning mud into household goods and tools. Those clay bricks gave rise to the world's first cities, probably around 4500 BCE. At the top of the city's social ladder were priests and priestesses who were considered nobility, then merchants, craftspeople, farmers, and enslaved people. The Sumerian Empire consisted of distinct city-states that operated like small nations. They were loosely linked by language and spiritual belief, but lacked centralized control. The earliest cities were Uruk, Ur, and Eridu, and eventually there were a dozen cities. Each had a king who served a role somewhere between a priest and a ruler. Sometimes they fought against each other to conquer new territories. Each city was dedicated to a patron deity, considered the city's founder. The largest and most important building in the city was this patron god's home, the ziggurat, a temple designed as a stepped pyramid. Around 3200 BCE, Sumerians began to expand their reach. The potter's wheel found a new home on chariots and wagons. They built boats out of reeds and date palm leaves, with linen sails that carried them vast distances by river and sea. To supplement scarce resources, they built a trade network with rising kingdoms in Egypt, Anatolia, and Ethiopia, importing gold, silver, lapis lazuli, and cedarwood. Trade was the unlikely impetus for the invention of the world's first writing system. It started as a system of accounting for Sumerian merchants conducting business with traders abroad. After a few hundred years, the early pictogram system called cuneiform
turned into a script. The Sumerians drafted up the first written laws and created the first school system designed to teach the craft of writing, and pioneered some less exciting innovations like bureaucracy and taxes. In the schools, scribes studying from dawn to dusk, from childhood well into adulthood, they learned accounting, mathematics, and copied works of literature, hymns, myths, proverbs, animal fables, magic spells, and the first epics on clay tablets. Some of those tablets told the story of Gilgamesh, a king of the city of Uruk who was also the subject of mythical tales. But by the 3rd millennium BCE, Sumer was no longer the only empire around, or even in Mesopotamia. Waves of nomadic tribes poured into the region from the north and east. Some newcomers looked up to the Sumerians, adopting their way of life and using the cuneiform script to express their own languages. In 2300 BCE, the Akkadian king Sargon conquered the Sumerian city-states. But Sargon respected Sumerian culture, and Akkadians and Sumerians existed side by side for centuries. Other invading groups focused only on looting and destruction. Even as Sumerian culture spread, a steady onslaught of invasions killed off the Sumerian people by 1750 BCE. Afterward, Sumer disappeared back into the desert dirt, not to be rediscovered until the 19th century. But Sumerian culture lived on for thousands of years. First through the Akkadians, then the Assyrians, then the Babylonians. The Babylonians passed Sumerian inventions and traditions through, along Hebrew, Greek, and Roman cultures. Some persist today. Sumer is credited with many firsts, including the first person to write the pronoun I. Learn about Enheduanna, high priestess of the moon god, desert exile, On July 4th, 2015, a NASA spacecraft called New Horizons was 5 billion kilometers away from Earth. It was only 10 days away from Pluto after flying for 9.5 years, when it suddenly dropped out of contact. But let's back up a little. As of 1989, mankind had successfully sent craft to every known planet in the solar system, except one, Pluto. You may have heard that astronomers don't consider Pluto or its brethren to be planets. However, most planetary scientists still do, which is why we're using that terminology here. There's a limited amount we can learn about Pluto from Earth because it's so far from us. Pluto, however, is a scientific goldmine. It's located in a region called the Kuiper Belt, home to many small planets, hundreds of thousands of ancient icy objects, and trillions of comets. This mysterious region holds clues to the formation of our solar system, and it was long, tantalizingly beyond our reach, until New Horizons. Objectives: explore Pluto, collect as much scientific data as possible, transmit back, then explore farther out in the world. To achieve this, New Horizons outfitted their craft with 7 state-of-the-art
enough to capture features the size of blocks in Ma'am, voice is Japan not from clear. tens of thousands of kilometers Yes, away, ma'am. and REX, designed to use radio waves to measure Pluto's atmospheric pressure and temperature. All equipment had to be built before lightweight. This new science and additional challenge had to target it as fast as possible. Why? Around 2020, Pluto will reach a point in its orbit where its atmosphere could freeze, and due to the tilt of its axis, more and more of Pluto's surface is shrouded in darkness every year. Pluto completes a full orbit once every 248 Earth years, so it would be a long wait for the next prime opportunity to visit. To see how New Horizons got to Pluto in time, let's jump to its launch. Its 3 rocket stages accelerated New Horizons to such great speeds that it crossed the 400,000 kilometers to the moon in just 9 hours. About a year later, the craft reached Jupiter and got what's called a gravity assist. That's where it flies close enough to the gas giant to receive a gravitational slingshot effect. New Horizons was then flying at around 50,000 kilometers per hour, as it would for the next 8 years to cross the remaining gulf to Pluto. Going at such an astonishing speed meant that slowing down to get into orbit or land would have been impossible. That's why New Horizons was on a flyby mission, where it would get just one chance to scream by Pluto and make its observations. The flyby would have to be fully automated, since at that distance, any signals to guide it from Earth would take 4.5 hours to reach it. So the team loaded the ship's computer with a series of thousands of commands called the core load that would begin to execute when the craft was 6.5 days from Pluto. But when New Horizons was just 10 days out, disaster almost struck. Ground control lost contact with the spacecraft. After 2 nerve-wracking hours, New Horizons came back online, but Mission Control discovered that its main computer had rebooted, losing the entire core load and other critical data. Without that, it would soon whiz by Pluto with virtually nothing to show for the mission. Alice Bowman, the mission's operations manager, led a team for 72 sleepless hours to get the instructions loaded back into New Horizons in time. Without room for a single error, she and her team pulled it off, and New Horizons began taking and broadcasting breathtaking images. Those observations have revealed a delightfully varied world, with ground fogs, high-altitude hazes, possible clouds, canyons, towering mountains, faults, craters, polar caps, glaciers, apparent dune fields, suspected ice volcanoes, evidence for past flowing liquids, and more. One of the most exciting discoveries is the 1,000-kilometer-wide Sputnik Planitia Glacier. Sputnik Planitia is mainly composed of slowly churning frozen nitrogen, and we've never seen anything like it in our solar system. The exploration of Pluto was a great success, but New Horizons isn't done yet. On January 1st, 2019, it'll break its own record for furthest explored object when it visits a Kuiper Belt object called 2014 MU69, which is orbiting the Sun another billion kilometers farther away than Pluto. The world is holding its breath to see what it'll find there. The author of this lesson, Dr. Alan Stern, is a planetary scientist and the leader of the New Horizons mission. He worked for over 26 years, leading a team of hundreds to accomplish this incredible act of exploration. For the full story, we highly recommend Alan's book, Chasing New Horizons, the epic first mission to Pluto, co-authored with planetary scientist David Grinspoon. मैम प्लूटो के बाद मैम एक और प्लेनेट आता है मैम एरिस। मैम पर वो भी मैम डॉफ प्लेनेट कहा जाता है।
Yes, yes, there are a lot of dwarf planets जिनके ऊपर काफी अभी debate है if they should be called planets or not because they are too small to be considered planets. There are a lot of studies and a lot of things that are happening around that. We'll see with time what happens in this area. तो चलो ठीक है next मैम next मैम क्या मैम न्यू हॉराइजन के साथ मैम मैम जिसने प्लूटो की खोज की थी मैम उनकी थोड़ी सी हड्डियों का मैम वो हड्डियां भी भेजी गई थी। मैम हॉरिजन क्या होता है? क्या क्या पूछ रहे हो बेटा? मैम हॉरिजन्स क्या होता है? हॉरिजन मतलब जिसे हम हिंदी में क्षितिज कहते हैं। जब हम लोग सुबह उठते हैं तो आपको दिखाई देता होगा कि सुबह क्या मतलब आप कभी भी देखते हो आपको एक लाइन दिखाई देती है अर्थ और स्काई के बीच में। यस मैम। दैट इज कॉल्ड हॉरिजन। चलो ठीक है नेक्स्ट क्लास में अपनी स्टोरीज के साथ आप लोग तैयार रहेंगे। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड सायरा। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। सायरा मैम, थैंक यू मैम।